Topic is velocity and acceleration, right? So first we have to discuss velocity. It's just the measure of displacement covered in time, and you already know about speed. So speed is the displacement distance covered in time t. So velocity becomes the displacement covered in time t. What is the difference? The difference lies in the direction. For speed, we had distance, and distance we know that there is no particular direction of distance. But velocity is something that requires, direction. So therefore, velocity is the measure of displacement, and displacement में कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? Of course, the magnitude of distance and the direction of motion as well, right? So therefore velocity is the measure of displacement covered कि एक ऑब्जेक्ट ने एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है, इन व्हाट डायरेक्शन, इन टाइम डेल टी, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर. दैट measurement is called velocity, right? Mathematically we can represent it as velocity is equal to displacement covered per elapsed time, or displacement covered divided by elapsed time. Elapsed time is just the time taken or that duration of time. Okay, so we can write it as symbolically v vector. Remember that here we don't have to just write v. इस केस में v वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हमेशा हम लोग एक स्मॉल एरो ड्रॉ करेंगे. सो v वेक्टर or velocity is equal to del s vector, and we have placed a small arrow because del s is a vector quantity. This displacement is a vector quantity. For speed, we didn't write this, we didn't draw this small arrow because speed was a scalar quantity. But for vector quantity, we have to draw this vector as well. Del s vector divided by del t, or we can say that displacement, change in displacement per unit change in time. Or we can also write it as del is actually just the change in initial value and final value. Or we can say that it is just the difference between starting value and the ending value. So starting value is the initial value and ending value is the final value. So the difference between final value and initial value is del, or delta. So delta S equals to SF, which is the final displacement, minus SI, which is the initial displacement, divided by final time minus initial time, right? So all three are the formulas for the velocity. Numerical problems में आगे चल के assignments में mostly या तो ये formula use होगा या ये formula use होगा to find out the velocity. और आगे चल के जो हम formulas use करेंगे that would be conditional formulas. कि अगर आपको numerical में वो conditional formulas use करने को कहा हो, then you will get to use those formulas. Okay, so this formula and this formula are mostly used in numericals. Average and instantaneous के बारे में भी हम पढ़ेंगे. So first of all, discussing is a vector quantity. Velocity is a vector quantity because displacement is a vector quantity. Its direction is same as the direction of displacement. Remember that जिस direction में आपकी body displace हो रही है उसी direction में velocity भी होगी. For example, I have 2 points, point A and point B. Let's suppose this is displacement. Displacement is the shortest distance which has a direction, right? So in this case, this is the direction of displacement, and again this is the direction of velocity as well. So velocity has the same direction as the displacement. Its direction is same as the direction of displacement. Its unit is meters per second, or we can represent it as मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड रेज़ टू पावर -1. आपको इनमें से कोई भी लिख सकते हैं. मोस्टली मीटर्स पर सेकेंड या मीटर सेकेंड रेज़ टू पावर -1 यूज़ होते हैं. Average velocity. Average velocity is basically just the total displacement traveled in total time. So अब जब हम अपनी पूरी जर्नी की बात करेंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक पूरी की पूरी जर्नी को डिस्कस करेंगे, देन द होल डिस्प्लेसमेंट divided by the whole time taken. Okay, for example, मैं पॉइंट ए से स्टार्ट करती हूँ एंड पॉइंट सी तक जाती हूँ, लेकिन बीच में पॉइंट बी भी आ रहा है. ओके, देन
this becomes the displacement. In this case, to find out the average velocity, we have to take point A and point C, the starting point and the ending point only, right? So we don't have to consider B in average velocity. सिर्फ starting and ending point discuss करेंगे and उन्हीं दोनों की value से हम लोग अपनी average velocity find कर सकते हैं. So the total displacement divided by total time taken, or we can write it as average. These brackets are used to show average quantity. So average V ऊपर vector भी आएगा या फिर arrow भी आएगा because this is a vector quantity equals to S, the displacement because it has vector or arrow above it, divided by t, the total displacement divided by total time. Instantaneous velocity is actually the displacement covered in very short time. So average velocity क्या था? The total displacement, total amount of displacement in total time. Instantaneous क्या है? Just that small displacement in very small time or very short time. So ये बिल्कुल opposite है average velocity के. In this case we have to take time which is very short. ठीक है, बिल्कुल एक इंस्टेंट के बराबर टाइम में हमने अपनी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है. देयर फॉर इन दिस केस del v which is v vector which is the instantaneous velocity is equal to limit del t approaches to 0. ये लिमिट हम इसलिए यूज़ करते हैं to show that this time is very short, to show that we are taking instantaneous velocity. We are going to calculate velocity for just an instant. Del s vector divided by del t, where del s vector is the displacement for that specific period and time is actually your the time elapsed, right? So in this case v equals to limit del t approaches to 0 del s by del t, which is the instantaneous velocity. So now we are going to compare this velocity with one another. First we have average velocity. In this case मैंने पॉइंट ए से लेकर पॉइंट ई तक एक जर्नी कंप्लीट की. इस जर्नी के दौरान मैं ए से स्टार्ट हुई एंड बी पर रुकी एंड देन सी तक गई, फिर डी पर और थ्रू डी में फिर लास्टली ई पर पहुंच गई. बट इन दिस केस जब मैंने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी होगी, इट मीन्स कि मैं सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट को देखूंगी. स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से ज्वाइन कर दूंगी एंड जिस भी डायरेक्शन में मैंने ट्रैवल किया उस तरफ एरो लगा दूंगी. Therefore, this becomes my average velocity. Okay, this velocity has no data about this B, this C, and this D, right? So it just has the information about the whole journey. And it's represented as V average equals to total displacement divided by total time. But for short intervals, और ये formula हमने कहाँ से लिया? The first formula. This is the first formula that we read. Okay, so in this case हम अपने पूरी जर्नी को small displacements में डिवाइड करते हैं. हमने A से लेकर E तक जर्नी कंप्लीट की, बट हम सबसे पहले A से B पर गए, देन B से C पर, देन C से D पर एंड D से E पर. इन दिस केस हम A से B पर भी वेलोसिटी फाइंड करेंगे, B से C पर भी फाइंड करेंगे, C से D पर भी, D से E पर भी, राइट? सो इन दिस केस फॉर द वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B is actually just the displacement from A to B in the direction of motion, right? So V equals to del S, the change in displacement per unit time, right? So this becomes the velocity for short intervals. Then coming towards the instantaneous velocity. Instantaneous velocity बिल्कुल short interval के लिए होती है. हमने सबसे पहले देखा average velocity आपकी पूरी journey के लिए. Short intervals पर जो होगी, जो basic you can say fundamental formula है velocity का, that is for short intervals. बीच में छोटे छोटे steps के लिए हम लोग velocity find करेंगे. Lastly, सबसे छोटे से steps के लिए हम लोग फाइंड करेंगे विच इज़ फॉर एन इंस्टेंट, जस्ट एक पॉइंट के लिए. अब इन दिस केस हम दोनों पॉइंट्स के दरमियान तो वेक्टर ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास दो पॉइंट्स नहीं हैं. हमने या तो पॉइंट बी पर फाइंड करना है अपनी अपनी वेलोसिटी, या फिर पॉइंट ए पर या पॉइंट सी पर, किसी एक पॉइंट पर फाइंड करेंगे. फॉर दिस वी हैव टू ड्रॉ अ वेक्टर. तो वेक्टर कैसे ड्रॉ होगा बिकॉज वी डोंट हैव टू पॉइंट्स. इन दिस केस वी हैव टू ड्रॉ अ वेक्टर जस्ट टेंजेंट टू दिस curve.
ओके। जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी जिस भी डायरेक्शन में होगी उस डायरेक्शन में एरो ड्रॉ करेंगे एंड दैट वुड बी योर डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर ये पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट वेलोसिटी शो कर रहा था, इसलिए मैंने स्ट्रेट एरो ड्रॉ किया। इस पॉइंट पर वेलोसिटी बिल्कुल स्ट्रेट थी, तो मैंने स्ट्रेट एरो ड्रॉ किया। इस पॉइंट पर बिल्कुल स्ट्रेट वेलोसिटी, तो मैंने यहाँ पर वेक्टर ड्रॉ किया। सो जो भी आपकी वेलोसिटी एग्जैक्टली उस पॉइंट पर होगी उसी डायरेक्शन में आप लोग वेक्टर ड्रॉ करेंगे and it's represented as v vector, which is equal to limit t del t approaches to 0 del s by del t, where del s is the displacement and del t is the time taken. यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने स्पीड के केस में किया था. सो द वेलोसिटी दैट डज नॉट चेंज ओवर टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, right? And a body is said to have uniform velocity if its will average and instantaneous velocities become equal. In this case, you have to remember that average velocity and instantaneous velocity जब भी दोनों equal आ जाएंगी, then you have uniform velocity. But जिस भी केस में average velocity and instantaneous velocity different आ गई, then you don't have uniform velocity, then you will have variable velocity, the velocity that changes over time. We will discuss acceleration in our next video.